Hello, my name is Sakshi Prayagini. I am an assistant professor in Department of Psychology at Srimati B.D. Jain Girls PG College, Agra. Today we will discuss about emotion, the basic concepts of emotion, basically. The flow of the presentation will start with the introductory part of emotion, the various types of emotion, the neurobiology of emotion, the basic theories of emotion, and I will also highlight the benefits of understanding emotion. Emotion is derived from the Latin word emover, which means to excite. Emotion refers to complex reaction consisting of physiological responses, such as changes in blood pressure and heart rate. It's a subjective feeling like happiness, anger, and so on. It can be expressed through reaction that reflects these internal states. For example, through your facial expressions or your postures. So emotions can be defined as a subjective response that is usually accompanied by physiological changes and is associated with change in behavior. These are the basic characteristics of emotion. The first one is emotions are universal. The second one is emotions are personal and unique. The third one is emotions rise abruptly but subside slowly. The fourth one is same emotions can be aroused by a number of different stimuli, objects, and situations. Last but not the least, whenever an organism is experiencing an emotion, a lot of energy is released. Types of emotion. Basically, there are two types of emotion. The first type of emotion involves two kinds of emotion. Uh, the first one is positive emotion, and the second one is negative emotion. Positive emotions are the pleasant emotions which are beneficial and helpful for the individual. For example, love, joy, happiness, etc. The negative emotions are unpleasant emotional experiences. It does not produce any beneficial effect. But sometimes some theorists say that negative emotions are important, play a crucial role for survival. For example, fear, anger, jealousy, etc. The second type of emotion involves two kinds of emotion again, primary emotion and secondary emotion. Primary emotions, these are direct emotional reactions to a situation and they are called primary because they come first. For example, joy, fear, sadness, etc. Secondary emotions, this is an emotional response to a primary emotion. For example, worry, anxiety, disgust, etc. If we talk about the neurobiology of emotion, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम ये दोनों पार्ट्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही इन्वॉल्व हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट में भी लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस का काफ़ी ज़्यादा रोल है. Limbic system, it is the part of the brain involved in our behavioral and emotional responses, especially when it comes to behavior we need for survival, like fight or flight situation. Hypothalamus, ये कैसे काम करता है अगर मैं इस बारे में बात करूं तो the amygdala receives signals related to a certain situation. When those signals have a suitable configuration and an appropriate context and reach a workable threshold, that is when they are emotionally competent. They activate nuclei in the hypothalamus and in the sector of the brain stem known as the periaqueductal gray. Working together, those brain sites execute the requisite emotional actions, release of cortisol into the bloodstream, adjustment of heart rate, respiratory rate, degree of gut contraction, and fear-specific behaviors. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ये फिजियोलॉजिकल अराउजल को कंट्रोल करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बेसिकली अराउजिंग स्टेट के लिए माना जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कामिंग स्टेट के लिए जाना जाता है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन फील करती है। बेसिकली ये कब एक्टिवेट इसके एक्टिवेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कब देखने को मिलेगी, जब आपको फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन देखने को मिलती है। मान लीजिए कि आपको डर लगा तो अचानक से आपकी जो हार्ट रेट होगी, अगर उस टाइम आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपने किसी भालू या किसी ऐसे जानवर को देख लिया जिससे कि आपको लगता है कि आपको डर लग सकती है, उसके बाद आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइज़ में जो प्यूपल्स हैं उनमें वो डायलेट हो जाएंगे, यानी कि वो बड़े हो जाएंगे। आपका रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई है, डाइजेशन आपकी उस टाइम स्लो हो जाएगी। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो ये स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने लग जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकल करके बाहर आते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं आप रिलैक्स हो चुके हैं, हम काम वाली स्टेट में आ चुके हैं, उसी टाइम जो चीज़ें आपके साथ पहले हो रही थी जस्ट अब उसका उल्टा होना शुरू हो जाएंगी। So, if we talk about the basic theories of emotion, James Lang theory सबसे पहले आती है. It was proposed by William James and Carl Lang. It states that emotions occur as a result of physiological reactions to events. It proposes that you will interpret your physical reactions and conclude that you are frightened. यानी कि सबसे पहले एक इमोशन अराउजिंग स्टिमुलस को आप परसीव करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने किसी भालू को देखा। जैसे ही हमने उस भालू को देखा, भालू को देखने के बाद कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमने अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में जाना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा और वो कुछ तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को लेकर के आएगा। और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होंगी। आपने जब भी किसी को भालू को देखते हैं, या फिर ऐसे तो नहीं देखा, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने कभी किसी सांप को देखा, सांप को देखने के बाद क्या होगा कि हमारी हार्ट रेट बहुत तेज बढ़ जाती है और हमें लगता है कि या तो हम वहां से भाग जाएं या तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि अब आप डर गए हो? तो जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि जैसे ही आपने सांप को देखा, आपके अंदर कुछ ना कुछ तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए और फिजियोलॉजिकल चेंजेस के इंटरप्रिटेशन के फलस्वरूप आपको पता चला कि आपको इमोशन का एक्सपीरियंस हो गया। यानी कि सबसे पहले आपने भालू को देखा, फिर आप कांपना शुरू किए और आपके दिमाग में आया कि मैं कांप क्यों रहा हूं या मैं भाग क्यों ना हूं। तब आपने इस चीज को इंटरप्रेट किया कि आपको इमोशन की अभिव्यक्ति हुई है अपने दिमाग में कि हाँ आपको डर लगी। द सेकेंड थ्योरी of emotion is Cannon-Bard theory. It was proposed by Walter Cannon and Philip Bard. It states that we react to a stimulus and experience the associated emotions at the same time. We feel emotions and experience physiological reactions such as sweating, trembling, and muscle tension simultaneously. यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आपको इमोशन अराउजिंग स्टिमुलस दिखा, तो आपको बॉडीली चेंजेस और इमोशन का एक्सपीरियंस दोनों ही एक साथ होगा। जेम्स लैंग थ्योरी में क्या हो रहा था कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस पहले आ रहे थे और इमोशन का एक्सपीरियंस बाद में हो रहा था। कैनन बार्ड थ्योरी में आपको इमोशन का एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों ही एक साथ होंगे। The third theory is Sactor-Singer two-factor theory. It was proposed by Stanley Sactor and Jerome Singer. It states that first you perceive a stimulus. For example, you are walking through the woods and you see a bear. The second, the stimulus triggers physiological arousal. When you see the bear, your heart rate jumps and you begin to feel tremble. Following physiological arousal, the individual will make a cognitive interpretation or appraisal of the situation to determine the specific emotion they are feeling. So you think, I must be afraid. In Sactor-Singer's two-factor theory, emotion is the result of the interaction of physiological arousal and the cognitive labeling.
हम यहाँ पे इमोशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशन? अगर मैं एक नट सेल में बात बताऊं, तो एज डिस्कस्ड इमोशन हैव हेल्प्ड ह्यूमंस इवॉल्व एंड सर्वाइव. According to Ekman, who identified the 6 basic emotions, it would be very dangerous if we did not have emotions. It would also be a very dull life because our emotions drive us excitement, pleasure, even anger. That is why we must be able to understand emotions as they play such an important role in how we behave, because they guide our behavior in a way that should lead us to a positive outcome. Thank you.